Hello, creative minds of class 5th. You all are welcome back again in your social studies class. Hope you all are doing amazing in this class. We are going to study chapter number 3, Evolutions of Humans. So here we have Evolutions of Human, chapter number 3. Now, beginning of life on earth. बच्चों आज हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस. कैसे जो मनुष्य है it become from nothing to this modern man. We are going to discuss about early human beings, and from early human beings to civilized men who is living the comfort, the best of his her life. कैसे बच्चों मनुष्य का विकास हुआ. आज से 4.5 billion years ago, the earth was a fiery mass of liquid matter. आज से बच्चों माना जाता है कि 4.5 बिलियन अगो अर्थ क्या थी, जो पृथ्वी थी वो एक लिक्विड मैटर थी. As the hot mass began to cool, और ये जो लिक्विड मैटर था ये धीरे धीरे ठंडा होने लगा. A rock crust formed on Earth's surface, and the gases escaping from the newly made rock formed the early atmosphere. The early atmosphere was made up of methane, ammonia, water vapor, and hydrogen. There was no free oxygen in early atmosphere. As the earth cooled further, the water vapor condensed, flooding the earth with rain from the ocean. Life began in harsh environments that dominated the early earth, such as hot springs, submarine volcanic vents, or in hot rocks deep within the earth. Early forms of bacteria began to evolve about 3,500 to 3,800 million ago, when there was a little oxygen in the atmosphere. The earliest living things on earth were primitive from bacteria, and they were single cell organisms. These types of cells are known as prokaryotes. So here some information is given to you that जो अर्थ थी वो क्या थी. पहले एक इट वॉज अ फायरी मास, वो एक आग का गोला था, एक पिघलता हुआ, एक जलता हुआ धीरे धीरे करके वो उस मतलब क्या हुआ, अर्थ जो है वो ठंडी हुई. फिर रॉक क्रस्ट आया बच्चों, जिसने अर्थ का फॉर्म किया. इनिशियल डेज में बच्चों कौन सी गैसेस थी एटमॉस्फेयर में? मीथेन, अमोनिया थी. देयर वाज नो atmosphere, there was no there was no oxygen in the atmosphere. अब धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों, धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा. As the earth cooled, further water vapor condensed wave flooding high in the earth with the rain to form the ocean. Life बच्चों began in the harsh environment that dominate the early earth. जब जीवन का शुरुआत हुआ था बच्चों, बहुत ही ज्यादा हार्श एनवायरमेंट था, बहुत ही ज्यादा कठोर हमारा ये पर्यावरण था. Such as hot springs, submarine volcanic vents, or in hot rocks deep with earth. बच्चों early form of bacteria began हुए to evolve about 3,500 to 3,800 million years ago, where there was little oxygen in the atmosphere. The earliest living things on the earth were primitive forms of bacteria, and they were सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स. दीज टाइप्स ऑफ सेल, इनको हम प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द आइस एज. सो अब हम पढ़ेंगे बच्चों आइस एज के बारे में. Ice age began 2.4 million years ago and lasted until 11,500 years ago. During this time, the Earth climate repeatedly changed between very cold periods during which glaciers covered large part of the world, and very warm period during which many of the glaciers melted. This cold period is known as glacials, ice covering, and the warm period are known as interglacials. When a glacier or ice sheet grows and moves across the landscape, it pushes rock and sediments. When the glacier melts, it leaves piles of these rocks behind. The rocks piles are called moraines. The moraines provide evidence that glacier once covered large part of the world.
बच्चों आज से 2.5 बिलियन अगो ऐसे माना जाता है कि हमारी जो पृथ्वी है इट वाज ऑलमोस्ट कवर्ड विद व्हाट इट वाज ऑलमोस्ट कवर्ड विद आइस द स्नो which come from glaciers. So that age was known as ice age. Then we have human stand erect. अब दूसरी एज है बच्चों, इस एज में ह्यूमन जो है वो उसने सीधे चलना स्टार्ट कर दिया, उसकी बॉडी एरेक्ट हो गई, सीधी हो गई और वो सीधे चलना स्टार्ट कर दिया। सीधे चलने से मतलब है पहले वो जानवर की तरह चलता था और धीरे धीरे आप यहाँ देख सकते हैं परिवर्तन। So human evolution is a lengthy process of change by which people originated from ape-like ancestors. ठीक है बच्चों, कुछ ऐसे एविडेंस मिलते हैं जिनसे ये पता चलता है कि हम पहले कैसे थे, हम पहले जानवर जैसे थे। So scientific evidence shows that the physical and the behavioral traits shared by all the people originate from ape-like. हमारे ancestors क्या थे, हमारे ancestors they are somewhere related to ape and over a period approximately 6 million years. Great apes बच्चों कहाँ रहते थे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे रहते थे apes, and it is thought that the human evolution started when a group of apes, now जिन्हें हम Australopithecines कहते हैं, they began to live more in the savannah. सवाना क्या है बच्चों, सवाना है more open trees, shrubs and grass. Now ये ग्रुप जो है this group started walking on legs. अब ये ग्रुप जो है वो धीरे धीरे चलने लगा. They began to use their hands to carry things. उन्होंने अपने हाथ का इस्तेमाल कर लिया चीजों को उठाने के लिए. Life is the open was different. Open में life different थी और बहुत सारे advantages थे and having a better brain. धीरे धीरे करके बच्चों उनका दिमाग जो है वो बड़ा होने लगा, दिमाग में परिवर्तन आने लगा और धीरे धीरे वो सिंपल टूल्स औजार बनाने लगे. So this process began at least 5 billion year ago and we have fossils. हमें उनके उस चीज के सबूत भी हमारे पास है, हमारे पास fossils हैं of 2 or 3 different walking apes and one was ancestors of human. The biological name for human or man उसे हम homo बोलते हैं and the modern human species are called homo sapiens. So sapiens मतलब होता है thought, homo sapiens क्या है, इसका मतलब है the thinking man, यानी वो आदमी जो सोच सकता है. Then we have human evolution. अब मनुष्य का परिवर्तन कैसे हुआ? So evolution of human has been taking place through millions of years. It marks their existence on the earth. The process that led to emergence of modern humans from the primitive is known as human evolution. Initially, humans were hunter-gatherers and led a nomadic life. They traveled from one place to another in search of food, water, and shelter. They hunted wild animals and ate them raw. They gathered fruit, root, nuts, and seeds to eat. When all these resources got exhausted at one place, they moved to another. Like other animals, early humans also lived in forests and they led a primitive life. Time roaming here and there. They lived on the branches of trees in caves and on rock shelters. They had no clothes to wear. They had covered their bodies with animal skins and barks and leaves of trees. Here we have fact, early humans क्या थे, nomads थे. बच्चों अब इस पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि धीरे धीरे मनुष्य का परिवर्तन भी स्टार्ट होने लगा. ठीक है, and it make their existence on earth. अब उनकी existence पता चलने लगी. The process that led the emergence of modern humans is your primitives, जिनको हम ह्यूमन इवोल्यूशंस कहते हैं. धीरे धीरे बच्चों मनुष्य ने क्या स्टार्ट किया, उसने स्टार्ट किया हंटिंग करना अपने जीवन जीने के लिए, क्योंकि बच्चों उस टाइम भी बेसिक नेसेसिटी इंसान की क्या थी, बेसिक नेसेसिटी थी पानी पीना, सांस लेना और खाना खाना. सो बेसिक नेसेसिटी के लिए उसने हंटिंग स्टार्ट कर दिया, शिकार करना स्टार्ट कर दिया. शिकार करते करते वो खाने को बटोरने लगा, वो फूड हंटर से फूड गैदरर होने लगा और धीरे धीरे वो क्या हंट करता था बच्चों, वाइल्ड एनिमल और रॉ एनिमल हंट करता था. वो क्या गैदर करने लगे, वो फल, रूट्स, नट्स और सीड्स को वो गैदर करने लगे. लाइक अदर एनिमल, ह्यूमन जो है वो भी कहाँ रहते थे, जंगल में ही रहते थे, वो जंगली लाइफ बिताते थे.
दे स्पेंड देयर टाइम, वो अपना समय बच्चों इधर से उधर घूमने में ही बिताते थे और वह कोई भी कपड़े नहीं पहनते थे। और धीरे धीरे चल के उन्होंने अपने लिए कपड़ा बनाना स्टार्ट किया। वो एनिमल्स की खाल या पेड़ की बार जो होती है उससे उन्होंने कपड़ा बनाना स्टार्ट किया। वो पत्तियों के ट्राउजर्स बना के भी पहनते थे। आई होप आपने कार्टून्स वगैरह में अर्ली ह्यूमन बींग्स को देखा होगा या मोगली को देखा होगा, हाउ ही यूज्ड टू कवर हिज बॉडी। Then we have tools and weapons. So early human जो था, early human like killed animals and ate their flesh. Initially they used stones to hunt animal. While hunting they could not run as fast as the animal, so they tried to improve the weapons they used to hunt animal with. They found that they could kill animal easily with sharp objects, and most of the tools used by early humans were made of stones, and stones were easily available. Early humans started making tools of stones, and later they made crude stone tools for a particular and specific needs. Flint, a type of stone, was widely used to make tools and weapons, and it's chipped easily and could be molded in different shapes. अब बच्चों अर्ली ह्यूमन ने स्टार्ट किया टूल्स औजार बनाना, टूल्स और हथियार बनाना। ठीक है, अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे, एनिमल्स को मारते थे और उनके फ्लैश को खाते थे। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, स्टोन से एनिमल का हंटिंग स्टार्ट कर दी, पत्थर से एनिमल की हंटिंग स्टार्ट कर दी। वाइल हंटिंग दे कुड नॉट रन फास्ट एज एनिमल, बच्चों शिकार करते समय वो एनिमल की रफ्तार को नहीं पकड़ सकते थे, तो उन्होंने अपने वेपन्स को इम्प्रूव किया। एंड दे फाउंड दैट दे कुड किल एनिमल्स इजली विद शार्प ऑब्जेक्ट। उन्होंने देखा कि एनिमल अगर दूर भाग रहा है तो उसके ऊपर अगर हम शार्प ऑब्जेक्ट फेंकेंगे तो उसकी डेथ हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने क्या फाइंड किया, उन्होंने फाउंड बनाना स्टार्ट किया, स्टोन्स को बनाना स्टार्ट किया। Here you can see early humans hunting with stone in the picture. Then we have species of early humans. So here we have some species of early human. Species of early human discover की गई थी बच्चों अफ्रीका में। Much of human evolution occurred there, and the fossils of early humans who lived between 6 and 2 million year ago come entirely from Africa. ऐसा माना जाता है कि पहली प्रजाति जो मनुष्य की मिली वो अफ्रीका में मिली। 15 to 20 different species of early humans have been recognized with the help of their fossils. So fossils help करते हैं बच्चों to learn about the physical appearance of early humans and changes that follow. The size of the bone, its shapes and marking left behind the muscles tells कि वो human body कैसे move करती थी, कैसे tools पकड़ती थी, and how the size of the brain changed over the year. The remains of the earliest human beings were found in Java, Asia. Here we have some of the flow chart which is telling you how the species of early human started, how the evolution held. So here you can study this chart as well. Wow fact, the remains of the earliest humans have been found in Africa. It means that human being first appeared in Africa. Now here we have glossary from the chapter. Prokaryotes, single cell organisms, glacials, ice covering, interglacials, warm periods, moraines, the rock piles are called moraines, and Homo sapiens, the thinking man. So this was all about your chapter. I hope you had enjoyed learning how the evolution of men take place. कैसे बच्चों मनुष्य ने विकास किया और आज जाके पहले के मनुष्य और आज हम में कितना ज्यादा अंतर है। वी आर लिविंग आवर बेस्ट, बट पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। सो वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल द पीपल जिन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को इन्वेंशन किया, हमारी लाइफ को इतना ज्यादा कंफर्टेबल और आसान बना दिया। That's all for today. I'll be seeing you in another social studies class. Till then, take care. Bye-bye.